Hello, hi, namaste. I am Samir Sutpati welcoming you to the lecture number 1 of a new chapter that is ray optics and optical instrument. तो बोर्ड एग्जाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जदि आम देखा ताले चैप्टर वेटेज बहुत बढ़िया अच्छे बट बहुत सारा पिला कौन करते एटा को लेंथी बोली भाबिकी छाड़ दियंती काहे ना एक्चुअली चैप्टर ला लेंथी अछि बट इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर बुझलो ना जदि यार कांसेप्ट को बहुत भल से बुझी परियो तमे ताहले तमे एटारे स्कोर करटा बहुत सहज ठीक तो आज हमें से चैप्टर को स्टार्ट करे जाउछे दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सो आज गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास हम आम आज इंट्रोडक्शन नबा कि एक्चुअली ए चैप्टर में कौन कौन सब पढ़ियार अच्छे ओके सो बेसिकली जितेबाला आम रे ऑप्टिक्स विषय डिस्कस करछे वी हैव टू नो कि व्हाट इज ऑप्टिक्स बिफोर दैट आम जानियार अछि रे माने कोन ओके अच्छा टोटल चैप्टर रे आम लाइट विषय पढ़िया जाऊँ लाइट जोटा कि आम सराउंडिंग रे आमको हेल्प कर सब जिन देखिए बुझीपार कि ना बुझीपार तो जहाँ भी जिन आम आखि आगे अच्छे कौन से सोर्स रु फर्स्ट लाइट आसिक से जिन पड़ुची देन सेठू रिफ्लेक्शन है कौन हो मोर आखिरे पड़ुची मुझे गोटे वर्ड कहली रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रो मीनिंग कौन से आम आगू देखा है ओके सो किसी एमती फेनोमेनन्स अच्छी जोड़ा को कि आम कौन कर चैप्टर स्टडी कर एंड दैट इज ऑल अबाउट लाइट्स सो जेमिति साउंड होची गोटे एनर्जी सेमिति लाइट भी गोटे एनर्जी ठीक अच्छे तो लाइट प्रोड्यूस हुए केम कौन भी सोर्स पाखर सोर्स माने बुझी पारछु हमें किछि भी हे पारे से तमरो घरे जो बल्ब लागिछि सेटा भी गोटे सोर्स ऑफ लाइट हे पारे सन भी गोटे सोर्स ऑफ लाइट हे पारे गोटे कैंडल जो अछि कैंडल तमे तो निया जळुछु माने तार जो अपर पोर्शन जळुछि दैट इज आल्सो कैन बी ए सोर्स ऑफ लाइट अच्छा तो जो सोर्स ऑफ लाइट अच्छी से लाइट जो प्रोड्यूस होची केमती प्रोड्यूस होची ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स यू कैन से ठीक अच्छे तो सेठू कौन होची लाइट प्रोड्यूस होची एंड प्रोड्यूस है कि कौन होची जो जिंस को हमें देखिया चाहूचे सेटा ऊपर आसी पडुची देन सेठू रिफ्लेक्ट है कि हम आखि ऊपर पड़ले हमें कौन करि परछु तार गोटे इमेज फॉर्मेशन करि परछु एंड हमर ब्रेन सेटा सेंस कर दोची कि हां मो आखि आगे ए जिंसटा अछि बोली ठीक सो लाइट रो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेनन विषय हमें कौन करिया चैप्टर देखियो अच्छा तो चैप्टर ना होची छुआ रे ऑप्टिक्स है तो रे माने फर्स्ट टाइम कौन बुझिया लाइट माने बुझले कि लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी यू कैन से ओके लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ओके एंड जहां द्वारा कि हमें पूरा बेसिक जिंस कहबा देखि परछ ओके तार डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनन्स अछि सेगुडा हमें फर्दर आगरे माने क्लास रे आगो को हमें डिस्कस करबा सो फर्स्ट हमें टिके देखिबा रे मींस कोन देयर इज ए टर्म रे रे मीन्स गोटे लंबा गार हाँ कि ना तो लाइट कौन हुए गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को प्रोपागेट हुए राइट सो से प्रोपागेशन को हमें बुझा पाई बोली ताको हमें रे द्वारा डिनोट करू कि लाइट टा कौन सी गोटे स्ट्रेट लाइन रे कौन होची ना पास होची बा प्रोपागेट होची रे ऑप्टिक्स रे हम बेसिकली कौन करबा ना लाइट रो पार्टिकल नेचर को स्टडी करिया हमें फर्दर तक डिवाइड करवा ऑप्टिक्स को टू टाइप्स रे जेटा कि तुम देखि परतो स्क्रीन रे अछि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स बिफोर दैट रे माने कोन बुझले हमें कि लाइट रो प्रोपागेशन रो डायरेक्शन को जो लाइन द्वारा हमें शो करोचे दैट इज व्हाट द रे ओके सो रे बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट डायरेक्शन ऑफ एमदी मुझे लिखि दूची रे is a straight line which shows the direction of propagation of light सेमती आउ गोटे टर्म आसी पारे दैट इज व्हाट बीम ठीक अछि बीम कहा को कहबा हमें जते बळे नंबर ऑफ रेज थिबो ठीक अछि नंबर ऑफ रेज जोडा के पैरेलल थिबो परस्पर सहित से बंच ऑफ रेज को हमें कोन कहबा बीम बोली कहबा सो बीम is bunch of
parallel rays. तो rays को हमें एमती गोटे straight line सहित गोटे arrow mark द्वारा show करे परिबा. So this is your ray which shows the direction of light propagation. Okay. अच्छा एबे आसीबा optics. So optics is a branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. So this is the definition of optics, which deals with the study of nature, production and propagation of light. And that optics can be divided broadly into two main branches. One is geometrical optics and another one is physical optics. Geometrical optics hochi tomro ray optics and physical optics hochi tomro wave optics. Geometrical optics or ray optics jo hochi na, that concerns itself with the particle nature of light. And based on the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light in the sense आमे light को assume करिबा कि से गोटे सीधा माने straight line देखना पास करछि and सेटा भी हम कोन कहले ray of light बोली कहले. This is rectilinear propagation of माने linear propagation, right? The law of reflection and refraction of light is also we will study in this part in case of ray optics. हला देखो से लिखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो ए दिटा होची एमती गोटे फेनोमेनन जहा कि लाइट द्वारा बनुची एंड सेटा को हम कोन करबा ए चैप्टर स्टडी करियो. हला ए चैप्टर ब्रॉडली हमें दीटा जिंस को स्टडी करिया अछि रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन. और गोटे जिंस अछि प्रिज्म रे हम रिफ्रैक्शन भी देखिबा एंड डिस्पर्शन भी देखिबा. ठीक अछि. सो किछि फेनोमेनन अछि जोडा कि हम रे ऑप्टिक्स रे माने ए चैप्टर देखिया जाउ छै. तो ओवरऑली जदि मु कहिबी ए चैप्टर रे जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर अछि रे ऑप्टिक्स चैप्टर रे हमें कहया बोले गोटे ऑब्जेक्ट नबा हला आ से ऑब्जेक्ट रो इमेज बनेबा. ठीक अछि. तो ऑब्जेक्ट रो पोजीशन इमेज रो पोजीशन केमति होबो कोन होबो तार फॉर्मुलेशंस केमति होबो से सब गुडा को हम कोन रहै चैप्टर स्टडी करै छी. It explains the formation of images in mirrors, lenses, aberrations of optical images and the working and designing of optical instruments. Optical instruments कोन जेमति कि तमे माने करो गोटे पेपर धरछ एंड से पेपर किछि जिंस लिखा है जोटा कि बहुत सान अक्षर लिखा है तुम सेटा खाली अक्षर लेट से देखा जाउनी हला. तो तमे कोन यूज करियो गोटे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करियो. से मैग्नीफाइंग ग्लास टा होछि कोन गोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. बुझि परछो सेठी हमें कोन करूछे ना गोटे लेंस रो यूज नउछे. सेटा को टाइप रो लेंस जानि छु कि दैट इज ए कन्वेक्स लेंस. हला से कन्वेक्स लेंस कोन सेटा हम देखिबा हला. अच्छा सेमिति तमे माइक्रोस्कोप्स यूज करथिबो हां कि ना. एंड माइक्रोस्कोप रो भी टाइप्स अछि. तमरो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हे गला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हे गला. तो सेगुडा करे सब लेंस यूज होछि. सो लेंस विषय हमें चैप्टर रे पढिबा रे ऑप्टिक्स चैप्टर रे. एंड तमरो कैमरा अछि हला सेथरे भी यूज होछि लेंस गुडा को. ठीक अछि. टेलीस्कोप अछि सेथरे भी यूज होछि. सो टेलीस्कोप एगुडा को सब कोन रहनो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हे गला. Next comes to wave optics. So wave optics concern itself with the wave nature of light. And it is based on the phenomenon like interference and diffraction, then polarization, etc. So different types of phenomenon अछि and different phenomenon पाई बोली हमें light रो different nature को study करियो. ठीक अछि. Light is basically having dual nature. ठीक अछि. तो एमती कहा जाए कि लाइट रो दीटा नेचर अछि माने से वेव टाइप रो भी बिहेव करछि एंड पार्टिकल टाइप रो भी बिहेव करछि. बट जब टिके डीप जाय के हम भाबिबा माने देखिबा जदी लाइट रो सिंपल किछि नेचर ना. सो लाइट जो अछि से डिपेंड करछि तमे को टाइप रो फेनोमेनन को स्टडी करबा चाहू છો. तमे रिफ्लेक्शन को स्टडी करबा चाहू છો सेठी तमे तारो कोन ना पार्टिकल नेचर को नेकी स्टडी कर परियो. रिफ्लेक्शन अवश्य वेव नेचर को भी नेकी स्टडी करी होबो. बट इंटरफेरेंस बोली गोटे टर्म अछि जोटा कि तमे वेव ऑप्टिक्स रे पढिबो सेठी तमे पार्टिकल नेचर को नेकी ना स्टडी करि परियो नाही लाइट रो हला. सेठी वेव नेचर नेकी ना हम कोन करि परियो स्टडी करि परियो. तो डिफरेंट फेनोमेनन रे लाइट रो में डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी करियो. बुझि परछो ना बुझि परनो. मु एटा सुनिथिली कोडू एटा केतु ठीक केतु मु जाननी. बट जेंदे कि मु तुमको कहबी एबे मो पाखरे गोटे एमती एनिमल अछि हला जो एनिमल रो की जो डिजाइनिंग हेछि बॉडी रो जो शेप अछि सेटा कुकुर टाइप रो हला.
एंड तार जो वॉइस बाहर है सेटा बिलेई टाइप माने से बिलेई भाया मियो मियो करुचे एंड तार बॉडी जो अच्छे सी हूँ कुकुर टाइप बुझला तो से कुकुर ना बिलेई तुम कौन कह किसी भी नहीं हाँ कि ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप बिहेव कर तुम जान कि हाँ यहाँ कुकुर टाइप बिहेव करছে आउ ये बिलेई टाइप बिहेव करছে सेमिति लाइट रो दुईटा नेचर अच्छे इन द सेंस लाइट किसी भी नहीं है से बिहेव करছে किसी टाइप रो गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन गोटे पर्टिकुलर फेनोमेनन बुझी पारछ अच्छा जीवा आगु सो लाइट रो कौन सी फेनोमेनन पढ़िया पूर्व आम फर्स्ट देखीदे कि ऑब्जेक्ट माने कौन है कहीं आम ऑब्जेक्ट को लेकिन रे ऑप्टिक्स रे तार इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखिए है तो मेन जिनस हूँ कौन कि ऑब्जेक्ट माने कौन आमे कौन करियार अछि किछि गोटे ऑप्टिकल एलिमेंट ऑप्टिकल एलिमेंट माने से मिरर हे पारे हां लेंस हे पारे ठीक अछि से गुडा को हमरो ऑप्टिकल एलिमेंट सो ऑप्टिकल एलिमेंट रो सामना रे आमे कौन करियार अछि कोन से ऑब्जेक्ट को रखिवार अछि सो दैट से ऑब्जेक्ट रो किछि गोटे इमेज बनेबो सेटा ही हमके टोटल चैप्टर पढियार अछि ओके अच्छा जो ऑब्जेक्ट अछि से ऑब्जेक्टटा तमरो पॉइंट ऑब्जेक्ट हे पारे न तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हे पारे ठीक अछि मन करो मु एडी गोटे पेन नेबी सो पेन इज आल्सो कैन बी ए ऑब्जेक्ट बुझ पड़छ ना माने हम एमदी कहि परियो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माने आर ईच पॉइंट टू कोन हे परियो रे ऑफ लाइट्स गुडा को बाहर परियो प्रोड्यूस हे परियो बुझ पड़छ ना बुझ पानो सो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हे पारे एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हे पारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रे हमें कहि परियो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज द व्हाट so you can say that's a summation of point objects अच्छा हमें एठी वर्तमान point objects ने की स्टडी करि परिबा हला ओके अच्छा सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट देखिबा गोटे होची तमरो रियल ऑब्जेक्ट आ गोटे होची वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कौन सुनो रियल ऑब्जेक्ट which formed when two or more incident rays actually emanate or appear to emanate from a point मने करो एठी गोटे पॉइंट अछि लेट्स से दिस इज अ पॉइंट हला आउ ता सामने दे हम कोन करछ गोटे ऑप्टिकल एलिमेंट रखछे भाबो कि मोटे मिरर रखछे लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर हला एटा पानी वाले देखा होछि कि ना एक्चुअली जो मिरर अछि ना मिरर रो दीटा साइड थाए दीटा फेस थाए ना गोटे फेस रे जो फेस रे कि तुम निजो को देखि पड़छो आ गोटे फेसटा पछपड़ देखियो जरा कि पॉलिश हे होछि बस ए पॉलिशनेसटा को मोइड कोन करछि एंदी गारो देखना सो करछि ओके सो दिस इज ओ इज द ऑब्जेक्ट सो ओ रो कोन होछि रे ऑफ लाइट्स गुडा तो एंदी बाहर होछि तो आपको हम को टाइप रो ऑब्जेक्ट कहबा छुआ रियल ऑब्जेक्ट बोली कहबा जदि कोनोसी ऑब्जेक्ट रो रे ऑफ लाइट्स बाहर थुबो और बाहर लाले देखा होथुबो देन ताको हम कोन कहबा रियल ऑब्जेक्ट Rays physically originate from the object and strike the optical element हला तो physically से गुडा को माने जो rays अछि से ऑब्जेक्ट टू बाहर थबा एंड से जाकी कोन होबो ना तमरो ऑप्टिकल एलिमेंट ऊपर जाकी स्ट्राइक होय स्ट्राइक हला पर कोन होबो कोन नै हम फर्दर आगु देखिबा वर्तमान हम फोकस करछि कि रियल ऑब्जेक्ट कोन बुझिया में तो रियल ऑब्जेक्ट माने कोन बुझले एमेथि गोटे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअली रे ऑफ लाइट्स गुडा को ओरिजिनेट होथुबे बा प्रोड्यूस होथुबे ओके नेक्स्ट कम्स टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हेन ए कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज वुड मीट एट अ पॉइंट but are intercepted by an optical element before meeting the apparent point of convergence behind the element acts as an object पत्रा सुन के एठी मु ऊपर कर दोछि ड्रॉ भाबो कि एमते दीटा रे ऑफ लाइट आछन हला दीटा रे ऑफ लाइट आछन तो एमाने फर्दर आगु को जाके कोनोसी गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे हां कि ना गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे हला मन करो ओ पॉइंट रे इंटरसेक्ट करि थानते मु कोन करली ए मझिरे गोटे ऑप्टिकल एलिमेंट रखिदेली एटी कोन करली गोटे ऑप्टिकल एलिमेंट रखिदेली दिस इज योर ऑप्टिकल एलिमेंट
तो जतले मु ऑप्टिकल एलिमेंट रखिल ना ये जो दुटा रे अछंती ए दुटा जाक रे से पॉइंट जाके इंटरसेक्ट करि परियो कि नाही बट जदि आम आपको एक्सटेंड करवा से तो फिजिकली जाके मीट करेनि बट जदि आम आपको एक्सटेंड करवा से पॉइंट रे से माने मिसला बडे लागिवो दे अपियर टू मीट एट दैट पॉइंट सो सेठी जो पॉइंट टा फॉर्म हला सेटा को हम कोन करबा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोली कर बुझी परले ओके सो this is all about a real object and virtual object so real object को देखि परछो हमें कि actually हमरो जो light अछि that can originate from that particular object and that object is called as real object but in the case of virtual object the light okay actually do not produce or do not originate okay it is formed when converging set of rays would meet at a point but are intercepted okay by an optical element before मीटिंग ओके एडी गोटे वर्ड अछि कन्वर्जिंग बोली कन्वर्जिंग आउ डाइवर्जिंग देरा जिंस अछि कन्वर्जिंग माने जदि हमें दुटा रे ऑफ लाइट को नबा से दुटा रे ऑफ लाइट कोनोसी गोटे पॉइंट रे आसी कि मीट करिवार अछि ताले से दुटा रे ऑफ लाइट को हम कोन कहबा कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट बोली कहबा हला कोनोसी गोटे पॉइंट रे से माने बाहर छथि देन दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट ओके so the virtual objects appears to exist behind the optical element okay appears to exist behind the optical element माने तमर जो मिरर अछि से मिरर रो पछपटे बनिबो बुझि परछो through no rays actually emanate from it but सेटो कोनोसी रे ऑफ लाइट ओके emanate हो नथबो काइन सेरा वर्चुअल रियल हेतिले सेटो emanate हेतन emanate माने प्रोड्यूस हेतन बट एटू emanate हबो नाही काइन से वर्चुअल अछि ओके सो नेक्स्ट हमें देखिबा टाइप्स ऑफ इमेजेस सो जदि हमें ऑब्जेक्ट नौचे आ कोन सुंदर ऑप्टिकल एलिमेंट आगर रखुचे नै कि तो सेठी कोन फॉर्मेशन हे पारे इमेज फॉर्मेशन हे पारे सो इमेज भी तमरो कोन हे पारे दुईटा टाइप रो हे पारे गोटे होची तमरो रियल इमेज आ गोटे होची तमरो वर्चुअल इमेज सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन reflected or refracted rays actually meet or converge at a point. If a screen is placed at that point, the image appears as bright spot and can be captured physically. Okay, वो मैं draw करके तुमको देखो जी एटा होची लेट्स से बड़ा ऑप्टिकल एलिमेंट ठीक अछि दिस इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट ऑप्टिकल एलिमेंट कौन भी हे पारे फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर हे पारे नले स्फेरिकल मिरर हे पारे नले लेंस हे पारे किछि भी हे पारे बुझ गलो खाली प्लेन मिरर बोली भाबिबो नाही सेति में मु गोटे वर्ड यूज करछि ऑप्टिकल एलिमेंट बोली हला ओके सो एठी हमें कोन करछ गोटे रियल ऑब्जेक्ट नै छै तो रियल ऑब्जेक्ट टू कोन हे पारे रे ऑफ लाइट्स गुडा को बनि पारे लेट्स से एमिति किछि रे ऑफ लाइट्स गुडा को बनबा ठीक अछि these are some ray of lights which comes from the real object तो ऑप्टिकल एलिमेंट किछि भी गोटे हे पारे हला मने कोन भाबो कि रे ऑफ लाइट्स गुडा को आसी कि किछि ए टाइप रो माने तमरो जो मिरर अछि ना मिरर रो पछपड़ जाय कि मिसले आपको हमें कोन कहबा कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट कहबो सो कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट जाय कि पछाडे मिसले कोनस गोटे पॉइंट रे एक्चुअली मिसछन रे ऑफ लाइट जाय कि एक्चुअली मिसछन तो सेठी तमरो जो इमेज टा बनिबो सेटा हमें कोन कहबा रियल इमेज बोली कहबो तो रियल इमेज बोली हमें मन केमि रखिया सुनो माने केमि बुझिबा हमें कि जदी रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करछन्ती कोनसे पॉइंट रे हला आफ्टर रिफ्लेक्शन ताल से हमें कोन कहबा तमरो रियल इमेज रिफ्लेक्शन कोन से हमें फर्दर आगु देखिबा तम खाली जानो कि गोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अछि गोटे ऑब्जेक्ट अछि आतरा इमेज बनेबार अछि जो रे ऑफ लाइट्स गुडा को अछि से रे ऑफ लाइट जदी एक्चुअली जाय कि मीट करी कि तमरो इमेज बनौछन देन से इमेज को हमें कोन कहबा रियल इमेज बोले बट जदी एमिति हैला माने तो एटा होछ गोटे ऑप्टिकल एलिमेंट एटा ऑप्टिकल एलिमेंट प्लेन मिरर बोली संदि किछि कहूटी ठीक अछि प्लेन मिरर बोली माइंड रे सेट करनो किछि भी कोनी जो ऑप्टिकल एलिमेंट किछि भी हे पारे हला जदी प्लेन मिरर नेबे बोले एटा भूल हेजो एमबी होबनी केबे ठीक अछि मु जस्ट खाली बुझाउ चाहू कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कोन हला अच्छा
तो लेट से एठी मु गोटे रियल ऑब्जेक्ट नहीं जाउची ये हूँ तुम रियल ऑब्जेक्ट तो एठू रे ऑफ लाइट एमती इंसिडेंट है देन से कौन हम लेट से रिफ्लेक्शन हम किसी टाइप ठीक अच्छे रिफ्लेक्शन बुझा आम तो ये जो रेटा देखुचे आम हाँ यहाँ को आम रिफ्लेक्टेड रे बोली कहवा तो से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जब मुझे पछ आड़ को एक्सटेंड करली से माने गोटे पॉइंट रे मिसला वाला देखा जाउछन हां कि ना तो एठी जो इमेजटा बनिबो हला माने यू कैन से कि बिसाइड द मिरर बिसाइड द ऑप्टिकल एलिमेंट ताको हमें कोन कहबा वर्चुअल इमेज हला ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एठी appears to meet हो माने से माने मीट हला देखा जे बट एक्चुअली मीट कर नथुबे तो रियल इमेज केते बळे फॉर्मेशन हो जते बळे कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करथुबे एंड वर्चुअल इमेज केते बळे फॉर्म हो जते बळे कि दे appear to meet at a point and that point at that point the image will form which type of image that virtual image okay so but appear to diverge from a point behind the optical element it is called an apparent image or virtual image okay that is not physically formed by real intersection of rays जेमति कि तमे कोन करछो कि मिरर रे तमरो चेहरा देखछो ना तो तमरो जो इमेजटा बनछि से इमेजटा मिरर रे पछोटे बनछि तमे से इमेज को छुई परियो कि नाही जे तमे से छुई पानो से कोन कहबा हमें वर्चुअल इमेज बोली कहबा बट जरा को तमे छुई परियो बस स्क्रीन रे कैप्चर कर परियो तको हमें कोन कहबा रियल इमेज बोली कहबा जेमति कि एडी पढले हमें हां कि ना हमें स्क्रीन गोटे रखि देले स्क्रीन ऊपर कोन हला गोटे ब्राइट कलर स्ट्रक्चर बनला से ब्राइट कलर स्ट्रक्चर तमरो इमेज तमे ताको कर पालो गोटे स्क्रीन रे कैप्चर कर पालो दैट इज अ रियल इमेज बुझी पारछो वर्चुअल इमेज माने तमे सेटा कैप्चर कर परबो ना अच्छा तो से इमेजटा केमती फॉर्म होछ भाबो दिए हमर जो आखी होछ ना हम आखी बा हमर जो ब्रेन अछि से एमिति सेंस करछ कि रे ऑफ लाइट जो अछि सब दिन स्ट्रेट लाइन ही हबो हला तो देखो दिए एठी माने ए फिगरटा देखो ए फिगर रे मु कोन करछ गोटे ऑब्जेक्ट नेछ हला आ सेठू कोन करछ किछि रे ऑफ लाइट बाहर करछ जोटा कि ऑप्टिकल एलिमेंट ऊपर जाके पडुछ तापरे किछि गोटे प्रोसेस होछि जोटा को हम रिफ्लेक्शन बोली कहउछे तो रिफ्लेक्शन है कि रे ऑफ लाइट एते पळे गला बट हमर आखी कोन भाबिबो ए जो रे ऑफ लाइट पळे गला सेटा पछबड जाके एक्सटेंड होउछ माने गोटे सीधा लाइन रे आगो को जाउछ हला एंड सेठी किछि गोटे इमेज बनउछ एंड से इमेजटा जो अछि तमे तमरो मिरर पछबड देखि पाछो एंड से इमेजटा को हम कोन कहउछे वर्चुअल इमेज बोली कहउछे बुझि पाछो Real image is formed by actual intersection of rays can be projected on the screen unlike virtual images appears in front of an optical element or like mirror and lens but is in case of virtual image it cannot be captured on a screen unlike real images formed by apparent backward extension of rays देखलो ना एटा एक्सटेंशन करले ना जो रे ऑफ लाइट बाहर को बाहर जाइतला सेटार पछाड़ को एक्सटेंशन करली सो दैट समान कोन से पॉइंट इंटरसेक्ट करले एंड सेटा को कोन करले वर्चुअल इमेज तो रियल इमेज आ वर्चुअल इमेज भितर डिफरेंस जानि परले रियल इमेज जो फॉर्म हबो सेटा एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट द्वारा फॉर्म हबो एंड वर्चुअल इमेज जो अछि सेटा केते बळे फॉर्म हबो जेतबळे कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर नथुवे ओके तांकर जो रिफ्लेक्टेड रे अछि ताको जदि मु एक्सटेंड करबी पछाड़ को माने जो भी ऑप्टिकल एलिमेंट अछि तार पछाड़ को जदि मु एक्सटेंड करबी से माने कोनोस गोटे पॉइंट जाके मीट करबे ओके दे विल अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट द इमेज विल फॉर्म नोन एज वर्चुअल इमेज बुझी परले बहुत से ओके तो ऑब्जेक्ट और इमेज को नै कि पूरा पूरी क्लैरिफिकेशन हमको मिल गेला तो एथरे कोनोस भी डाउट्स नथिबो बोली मु भाबछि Now comes to the next topic that is behavior of light at the interface of two medium. Medium or medium. A medium विषय तो मैं maybe chapter 1 रे देखी थी कि different types of media थाई परे जेमति कि तमरो एयर मीडियम हे पारे वाटर मीडियम हे पारे प्लेन तमरो ऑयल मीडियम हे पारे ग्लास मीडियम हे पारे बस सेमिति हमें डिफरेंट मीडियम रे लाइट केमिति बिहेव करछि ताको देखिबा ओके सेतबे हम कोन करछि गोटे ग्लास रो स्लैब नछि हला सो सी this is a glass slab that I have taken over here
ओके तो ग्लास स्लैब ऊपर मु कौन करबी गोटे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेबी लेट्स से दिस इज ए रे ऑफ लाइट जे कि एक ग्लास स्लैब रो इंटरफेस ऊपर आसिकी इंसिडेंट कर ठीक अच्छे बा इंटरफेस इन द सेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यू कैन से हला माने ए जो ऊपर पोर्शन तुम देखि पाउन एटा को हम कोन कहबा इंटरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक बाहर मीडियम 1 अछि एंड এটা যেহেতু গ্লাস র প্রিজমটা আর মিডিয়াম অলগা রহব যেটা কো মিডিয়াম 2 লিখছি বাহার লেট সে এয়ার মিডিয়াম আছে एंड এটা আমার যে আছে এটা গ্লাস তো যেতবেলে রে অফ লাইট আসে কি ইনসিডেন্ট করলা হলা এটি কিছু জিনিস আমু দেখিয়া কো মিলিব কোন কোন দেখিয়া মিলিব দেখো টিকে when ray of light incident on the interface of any surface you can say okay so সেটি কোন হবো দুইটা তিনটা জিনিস হই পারে গোটে হচ্ছে কোন না রিফ্লেকশন গোটে জিনিস কোন হই পারে রিফ্লেকশন হই পারে রিফ্লেকশন মানে কোন सबुठ बेसिक डेफिनेशन जो मीडियम रो रे ऑफ लाइट आस्थिला से मीडियम को का बैक करिवला दैट इज रिफ्लेक्शन माने एयर मीडियम रो आस्थिला इंटरफेस ऊपर पड़ला इंसिडेंट हला देन से मीडियम को का उधर पड़ेगला सो एटा को हम कोन कहबा रिफ्लेक्शन बोली कहबा फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड some amount of light get refracted some amount of light get refracted this is your incident ray of light this is your refracted ray of light sorry reflected ray of light and this is refracted ray of light तो जदि गोटे मीडियम रो रे ऑफ लाइट आसिला इंसिडेंट करला एंड आ गोटे मीडियम भीतर को गला ताल सेठी कोन होबो रिफ्रैक्शन होबो हला तो फर्स्ट रे ए जो केसटा हम देखिले एटा को कोन कहउछन हम रिफ्लेक्शन हला आ ए माने गोटे मीडियम जो चेंज हला बेसिकली सेटा को हम कोन कहबा रिफ्रैक्शन ठीक अछि आको हम कोन कहबा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड आको हम कोन कहबा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हला एंड एटा को हम कोन कहबा रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड किछि अमाउंट ऑफ लाइट कोन हे जबो एब्जॉर्ब हे जबो कोन पे ना एनर्जी ता हला ना तो जेहेतु लाइट गोटे एनर्जी ता दैट एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब ओके सो हमें कोन देखिले मु आउथ टिके रिवाइज कर दोछि कि जति हमें कोनोसी इंटरफेस ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेबा सेठी किछि फेनोमेनन्स देखिया को मिलि पारे जेमति कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सो रिफ्लेक्शन केस रे कोन होबो गोटे रे ऑफ लाइट आसी कि इंसिडेंट करिवो एंड जो मीडियम को से आसला सेम मीडियम को से वापस पड़ेबो तो ताको हमें कोन दोइबा रिफ्लेक्शन जदि गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम भीतर को जाउछ ताल सेठी कोन होबो रिफ्रैक्शन हला ठीक अछि एंड किछ अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी कोन हिजबो जो मीडियम जो चेंज हला बेसिकली सेठी कोन हिजबो से एब्जॉर्ब हिजबो तो एठी कोन लिखा है जे देखिबा when light traveling in one medium falls on the surface of a second medium the following three effects may occur a part of incident light is turned back into the first medium this is called reflection of light hala reflection of light बुझी गले then a part of incident light is transmitted into the second medium along change to direction हां तो हम भाबु तो कि एठी जो रे ऑफ लाइट अछि मु बनै छी हला एटा त सीधा नबा कथा थिला मते मु कोन बेंड करि कि नै छी ना भूल नै अछि जमा भूल करनी मु ठीक करछि कोन पै सी बेंड हला हमें फर्दर हला अपकमिंग क्लासेस गुडा करे जानि अच्छा next the remaining third part of light energy is absorbed by the second medium and that is called as absorption of light
तो तीनटा जिनिस हम देखले गोटे हला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन आई होप क्लियर है ये थिंग्स ओके चलो सो बेसिकली हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विषय पढ़िया जाऊ छे एबे तो हेडिंग दियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट definition कौन when light rays strike the boundary between two media that is called as interface okay part of light is turned back into the same medium then this phenomenon is called as reflection of light बुझी पारले कि reflection of light माने कौन किछि रे ऑफ लाइट आसी कि गोटे इंटरफेस ऊपर इंसिडेंट करला एंड से फर्स्ट मीडियम को आधर कोन हेगला टर्न बैक हेगला तो सेटा को हम कोन कहबा बस से फेनोमेनन को हम कोन कहबा रिफ्लेक्शन बोली कहबा देयर इज टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी ऑकर फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन हला गोटे होची रेगुलर रिफ्लेक्शन और ताको हम कोन कहउछंदी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हला रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन सो रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन रे कोन होची जदि हम पाखर गोटे स्मूथ सरफेस अछि और स्मूथ प्लेन सरफेस अछि फॉर एग्जांपल सी दिस इज अ स्मूथ सरफेस स्मूथ और प्लेन सरफेस हला मनगर अपर पार्ट जो अछि सेटा हमर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अछि तळ पार्ट हमर पॉलिश हे अछि जदि मो आ ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करे मु कोन कली आ ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेली एठी कोन हो रिफ्लेक्शन देखिया को मिलिबो हला आको हम कोन कहबा रेगुलर रिफ्लेक्शन हला सो जदि हम बकरे स्मूथ और प्लेन सरफेस अछि और ता ऊपर रिफ्लेक्शन देखु छ हमें देन दैट रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन दिस प्रोड्यूसेस high intensity in one direction for example seeing your face in a mirror so mirror ta tomar kon hote smooth surface or plain surface bas so sethu kon hochi na jo ray of light or reflection hochi ta ame kon kaba regular reflection diffused reflection mane kon diffused reflection or irregular reflection mane kor am bagare smooth surface jagare rough surface hochi ki shade sorry let's say this is a rough surface okay तो एठी जतबेले हमें लाइट रेज को इंसिडेंट करेबा तार रिफ्लेक्शन गुडा को किछि ए टाइप रो देखो this is called irregular reflection जेहेतु हम पाखरे जो सरफेस अछि सेटा रफ सरफेस अछि वो सरफेस जे हम पाखरे रफ सरफेस अछि तो एठी जो रिफ्लेक्शन देखिया को मिलुछि आपको हमें कोन कहबा irregular reflection हला अब एठी हम पाखरे दिला कोन स्मूथ सरफेस तो एठी जो टाइप रो रिफ्लेक्शन देखिया को मिलछि आपको हमें कोन कहले रेगुलर reflection बुझी पारलो ओके सो पढ़ दोछि थरे कोन लिखि के आनी छी म that diffused reflection which occurs on rough surface like wall or newspaper rays reflect at different angles due to surface irregularities enables us to see the object from any position example reflection from the wall or paper फॉर एग्जांपल तुम जाके तुमरो मिरर रे कोन करिवो फेस देखियो ट्राई करिवो तो फेस देखा जबो कोन बना सेठी जो रिफ्लेक्शन होची रेगुलर रिफ्लेक्शन होची तो परफेक्ट क्लियर गुड इमेज बनबो तुम बट तुम आखे अगर वॉल अछि लेट्स से हला तुम वॉल को देखि परछो बट वॉल रे तुमरो इमेज को देखि परछो कि देखि परनो कोन बना एठी जो सरफेस अछि से सरफेस कोन अछि इरेगुलर अछि जेहेतु इरेगुलर सरफेस अछि रिफ्लेक्शन इरेगुलर होछि
रिफ्लेक्शन इरेगुलर हेले कोनोसी गोटे सर्टेन पॉइंट रे क्लियर इमेज बनि पारो ना तो तुम ता देखि पारो तुम निजरो इमेज देखि पारो बट तुम से वॉल को देखि पारो कथा बुझि पारो तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन द्वारा हम सराउंडिंग को बहुत भलसे देखि पारो आ रेगुलर रिफ्लेक्शन जदि हला निज चेहरा हम देखि पारो बुझि पारो नेक्स्ट कम्स टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which is very important part रिफ्लेक्शन कोन बुझले एबे हमें रिफ्लेक्शन को लॉ को ओबे करछ ना बडे बोल से बुझ सो ता पय बोली मु कोन बोलबी गोटे मीडियम नै आउसी मीडियम तो नो गोटे इंटरफेस नो बेसिकली So a ray of light को मान के इंसिडेंट करेबी मते स्ट्रेट लाइन नंबर तेरे जगह कलर चेंज स्टिक के वेट this is a ray of light okay which incident on the interface hello बाबा के एटा होछ गोटे प्लेन मिरर एटा गोटे प्लेन मिरर it is a plane mirror hello how मैं गोटे ray of light को आनी के इंसिडेंट करले and this is called incident ray of light जो पॉइंट रे रे ऑफ लाइट आसे कि इंसिडेंट करिवो सेठी तमे कोन करिवो गोटे नॉर्मल टाइम नॉर्मल मींस जो प्लेन मिरर हमें नै छे तार गोटे सरफेस अछि जो सरफेस रे आसे कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करला से सरफेस प्रति ओके अलोंग द सरफेस तमे कोन करिवो गोटे परपेंडिकुलर लाइन टानिबो कि एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल सो दिस इज योर नॉर्मल देन कौन हम रिफ्लेक्शन हम रिफ्लेक्शन जो हम सेटा केमती हम देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जति की एंगल रे हला नॉर्मल टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जति की एंगल बनो थबो सेति की एंगल रे का कोन हबो तमरो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल टू सेति के एंगल का बनेबो कोयार अर्थ कोन सुनो ए ठीक मनकर 30 डिग्री एंगल बनला ठीक अछि तो ए जो रिफ्लेक्टेड रे तुम देखु छ एटा कोन कहबा छ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट सो से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट केते एंगल बनेबो कोन 30 डिग्री मु एठी जो एंगल देखु छ सेटा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल भीतर देखु छ ओके So the angle created between incident ray of light and normal is called a जो angle अपन देखु ना that angle is known as incident angle कौन कहेगा incident or angle of reflection है ना आपको हम कौन कहेगा incident angle और angle of reflection है ना आउ एठी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आउ नॉर्मल भितर जो एंगल तमे देखुछो ताको हम कोन कहबा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक अछि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बा इंसिडेंट एंगल को हमें आई द्वारा डिनोट करबा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें आर द्वारा डिनोट करबा एबे टिके लॉ गुडा को पढबा कोन लॉ कहै छी सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू लॉस फर्स्ट लॉ होची कोन ना द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन नै छथि हमें आई आउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोन नै छथि आर तो
तो फर्स्ट लॉ कहूँ कि एंगल ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर. Angle of I should be equals to angle of R. This is your first law. Incident angle will be equals to reflected angle, or angle of incidence is equals to your angle of reflection. Then second law कौन पूछे देखो ठीक है. The incident ray, here is the incident ray. Okay. The reflected ray, here is the reflected ray. The normal, yes, normal at the point of incidence. This is the point of incidence. This is the point of incidence. All lie in the same plane. এটা ওটা বলছে বুঝো, মানে আমি এমনিতে বুঝিবা কি এটা হচ্ছে তোমার ইন্টারফেসটা, হলা এটা হচ্ছে ইন্টারফেসটা. ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା. ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ତାର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଲି ବନଉଛି. बुझिपार तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अच्छी, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अच्छी, नॉर्मल जो अच्छी से गुडा को प्लेन रे इठी लाई करिया कथा कहै छी. बस देखो हमरो एटा होची इंटरफेस टू प्लेन, हला प्लेन ऑफ इंटरफेस, हला एठी आ गोटे प्लेन तुम देखि पारछो जोटा कि कोन अछि ना परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस प्लेन अछि. बस सेठी तुमरो रे ऑफ लाइट आसी इंसिडेंट होछि, हला एंड एट तुम नॉर्मल टाणुछो, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होछि. तो एटी जो कहै छी सेम प्लेन रे तीन जगह रहउछ. देखो ठीक बोलछे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आ तुमरो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. तीन जगह देखो गोटे प्लेन रे गाछन ना, को प्लेन रे अछन दैट प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. ये सुनो बुझी पालो बोलछे ये जगह लॉ मन रह गला. दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Next comes to angle of deviation. There is a new topic we are going to study, that is angle of deviation. Okay, so what you also ये हो जैसे इंटरफेस टा आ ऊपर ऐसे कि कोन हो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करियो. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कला पर हमें कोन करिया गोटा नॉर्मल टर्न हो. दिस इज द नॉर्मल. ओके, देन रिफ्लेक्शन हबो. रिफ्लेक्शन हेले रे ऑफ लाइट जति के एंगल रे इंसिडेंट करथिला सेति के एंगल रे कोन हबो रिफ्लेक्ट करि जिवो. तो एटी तुमरो एटा हे जिवो एंगल ऑफ आई, हला एंड एटा तुमरो हे जिवो एंगल ऑफ आर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें एटा को आई बोली लिखि परिया. जेहेतु आई इक्वल्स टू आर तो एटा को हमें आई लिखि परिया, किछ प्रॉब्लम नाही. एटा को हमें कोन कहले इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, हला एटा कोन कहले हमें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. अच्छा, और एटा तुमरो कोन अछि गोटे प्लेन मिरर अछि बा प्लेन मिरर इंटरफेस कर तोडा हम पॉलिश कर छी. अच्छा, जदि हम पाखरे प्लेन मिरर न थांदा ताहले ये जो रे ऑफ लाइट अछि ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये एमती सीधा पड़े थांदा. हां कि ना, जदि ये प्लेन मिरर टा न थांदा, प्लेन मिरर जदि न थांदा ताहले इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टा कोन हेतंदा सीधा पड़े जाता. जेहेतु प्लेन मिरर अच्छी ये कौन हला बेंड कला इन द सेंस रिफ्लेक्ट कला. हाँ कि ना. ओके, तो से एक्चुअली जो पाथ रे जाई थांदा से पाथ रे गलानी, तारा पाथ को से कौन करतला डेविएट करतला. केते के एंगल रे डेविएट करला, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. केते के एंगल रे डेविएट करला, केते के एंगल रे डेविएट करला ना. दिस इज योर डेल. डेल इज व्हाट एंगल ऑफ deviation. Okay, this is what the angle of deviation. अच्छा, देखो ये बोलते
ये टोटल केते अछि ये जो स्ट्रेट लाइन को नहीं छे स्ट्रेट लाइन रो एंगल केते हो टोटल टोटल एंगल केते हो पाई हो हां कि माने 180 डिग्री हो 180 डिग्री रु एठो दिक केते गला 2y हे गला एठो दिक केते गला 2y हे गला ठीक अछि तो एठो दिक केते हो टोटल हो हमरो पाई एठो दिक अछि 2y ताले एठो दिक केते हो हां दैट इज पाई माइनस 2y हला तो एंगल ऑफ डेविएशन हम कौन लिख पे देखो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू हमें लिखिबा मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिखिबा बिफोर दैट एटी के डिफाइन कर दो हमें एंगल ऑफ डेविएशन को दिस इज द एंगल produced due to the deviation of incident ray of light. Incident ray of light. At reflection. Reflection भी है पारे, refraction भी है पारे. ठीक है बर्तमान आम रिफ्लेक्शन को लेकिन स्टडी कर तो डेल रो मैथमेटिकल वैल्यू कौन नहीं परिया एठी के होछ हमरो पाई हला अब एठी तुम देखलो केते 2y हला तो हमको एटा बाहर करे अछि तो एठी के बाहर करे पहले कोन करे पड़ो हमें पाई रु एठी के माइनस कर दो तो एठी मिल छ हमको तो डेल इक्वल्स टू तुम कोन है जबो पाई माइनस ऑफ okay this is your angle of deviation buzi parle okay. Write it down then after we will move to the next topic so our next topic is image formation from plane mirror so plane mirror tamar syllabus re to nahi sendi mane specifically likhin hela seta ame tik dekhiba plane mirror re kemti image formation hoch देखो गोटे प्लेन मिरर नोचे किसी टाइप आई होप सीधा बनला ना पड़ला ओके सो दिस इज अ प्लेन मिरर हला एपोर्ट साइड जो पार्ट अछि दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हला दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस and एपोर्ट साइड जो पार्ट अछि एटा पॉलिश्ड अछि है ओके आ गोटे रे ऑफ लाइट आ गोटे हमें लाइन टान दो जो कि कोन रहबो न प्लेन मिरर रो परपेंडिकुलर लाइन है प्लेन मिरर सरफेस प्रति नॉर्मल हो ओके नेक्स्ट हम कोन करिया गोटे ऑब्जेक्ट मॉडल देखो এটা হচ্ছে লেটস সে একটা অবজেক্ট লেটস সে দিস ইজ এন অবজেক্ট তো আপন নাম দেবা এ বি বলি ইয়ে হচ্ছে তোমার অবজেক্ট হলা মনে করো অবজেক্ট মিরর থ্রু সম ডিসটেন্স ডি রে আছে কত ডিসটেন্স আছে ডি ডিসটেন্স আছে our height होची लेट से h एबे हमें कोन करिया रे ऑफ लाइट्स को पास करेबा आउ सेठी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ठीक है अप्लाई करिया देखो ठीक है ओके बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक मु आ गुप्ते जिन सब कहया चाहू छी काई ना सेटा हमें एठी अप्लाई करबा तो एठी कहि देले बोल रहबो एठी जण देबी एठी जण दे चलो तमर जो इंसिडेंस थाउची माने लाइट रो इंसिडेंस थाउची सेटा टू टाइप रो हे पारे हला मोर लिख दउ छ गोटा होची नॉर्मल इंसिडेंस आ गोटा होची ग्रेजिंग इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस माने देखो एटा जो तमर गोटा ऑप्टिकल एलिमेंट हला this is an optical element okay so optical element
रे ऑफ लाइट आसिक कौन है एमती सीधा नॉर्मली इंसिडेंट करला ठीक अछि एठी रे ऑफ लाइट जो आसिकी कौन गला ऑप्टिकल एलिमेंट जो सरफेस ऊपर सरफेस यू कैन से दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तुम पछपटटा तुम कौन अछि ना पॉलिश्ड अछि और ऊपर पटटा जो अछि सेटा तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अछि ठीक अछि दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो एठी रे ऑफ लाइट कौन हला ना पूरा पूरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आसिकी कौन हला इंसिडेंट करला ताको हम कौन करबा नॉर्मल इंसिडेंस बोली करबा जोठी की एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल्स टू केते होबो छुआ 90 डिग्री हो सॉरी 0 डिग्री हो केमदी हला आमे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोड देखुछन नॉर्मल टू देखुछन ना बस तो नॉर्मली ही जेहेतु इंसिडेंट करला नॉर्मल सहित एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन हो 0 डिग्री हो अच्छा आ गोटे अछि ग्राजिंग इंसिडेंस रे कौन हो भाबो कि एटा हमर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एबे जो मु येलो कलर ड्रा करछि दैट इज योर polished part okay this is the reflecting surface ray of light मन करो एमएडी आसी के इंसिडेंट करो हला किछि ए टाइप आसी के इंसिडेंट करो तो एटा हमर नॉर्मल हो ना नहीं केते एंगल कोन हो 90 डिग्री एंगल बन माने एठी कोन हो I equals to 90 degree and R also equals to 90 degree ठीक अछि तर नॉर्मल इंस्टेंस होछि ना सेठी रिफ्लेक्शन देखिया को मिलिबोनी जेमदे आस्तिबो से सेमदे पळे जिवो बा आगु को पळे जिवो हला तो वर्तमान हमें फेरिबा जो टॉपिक टा हम पढुतले वर्तमान दैट इज इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर तो नॉर्मल इंसिडेंस केस हम कोन देखले जदि नॉर्मल रे ऑफ लाइट आछी जो पाथ रे आस्तला से पाथ रे से रिट्रेस करछु एंड एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो इक्वल्स टू 0 डिग्री हो बुझी परछो तो मु एठी गोटे रे ऑफ लाइट नेबी जोटा कि नॉर्मली इंसिडेंट करिवो प्लेन मिरर ऊपर मु एठी पय तुमको पढेली छै ओके देख फर्स्ट मोटे रे ऑफ लाइट नेली जोटा कि प्लेन मिरर ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करला नॉर्मल इंसिडेंट कला माने जेमिति पाथ रे जाइतिबो सेमिति पाथ रे से रिटर्न हो ओके आउ गुटे रे ऑफ लाइट को आमे कोन करबा किछि गुटे एंगल रे पास करबा ए पॉइंट हला लेट्स से दिस पॉइंट इज नोन एज O हला ठीक अछि तो फॉर ओरिजिन यू कैन से तो एठी जदि हमें रे ऑफ लाइट को पास करबा देखो ठीक होछे एटा तमरो प्लेन मिरर हला आ एटा तमरो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोइ परियो रिफ्लेक्टिव सरफेस पे एटा कोन हला नॉर्मल हला तो नॉर्मल से तो एटा एंगल बनिबो ना नहीं दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल हला एट एंगल बनिबो केते बनिबो आई एंगल बनिबो दैट इज इंसिडेंट एंगल तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम कोन पढले जति के एंगल रे आसी इंसिडेंस होबो सेति के एंगल रे कोन होबो रिफ्लेक्शन हला तो एठी जो एंगल बनला दैट एंगल इज R and I should be equals to R अच्छा मिरर केस रे पछपटे इमेज बनुची केमदी इमेज बनेबो देखो ठीक फर्स्ट रे हमें जो रे ऑफ लाइट नैथिले मनस तो एटा नैथिले बस ए रे ऑफ लाइट कोन कहियतिला रिफ्लेक्ट बैक करतला और सेम पाथ को रिट्रेस करतला जदि हम आको पछाड़ को ठीक एक्सटेंड करबा ताले केमदी हो देखो आको पछाड़ को ठीक एक्सटेंड करछ ओके सेमिति सेकंड रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट करतला से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को पछाड़ को एक्सटेंड करछ कोन से पॉइंट जाके से माने मीट करछन कि ना नहीं कोन से पॉइंट जाके मीट करछन बस सेठी तमरो कोन होबो इमेज बनिजो एठी इमेज बनिजो तो एटा को टाइप रो इमेज हला के कोइ परिबो दिस इज योर वर्चुअल इमेज हला
এটা তোমরা h অফ অবজেক্ট थिला माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थिला एटा को लिखि दबा हमें हाइट ऑफ इमेज हैला दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज एंड केति की डिस्टेंस रे जाय कि इमेज फॉर्म हबो मन रखो जदि प्लेन मिरर अछि ताले ऑब्जेक्ट जति की डिस्टेंस रे अछि तमरो मिरर टू सेति की डिस्टेंस रे ही जाय कि तमरो इमेज फॉर्मेशन हबो बिहाइंड द मिरर बुझि परलो केमिति हमें गोटे प्लेन मिरर केस रे इमेज फॉर्म करे परिबा ओके तो आगो को जाय कि हमें जो भी टाइप रो मिरर्स गुडा पढिबा से गुडा भी एमि हम कोन करिया रे डायग्राम्स गुडा को बनाया को पड़िबो हला ठीक बुझि परलो बोलसे किसी पॉइंट्स अछि जोरा को हम पढि के बुझिबा आ कोन कोन माने नुआंस जानि हम the image formed by a plane mirror has the following properties acha so first of all the image is virtual that means the ray only appear to meet behind the mirror but do not actually converge eta hi to ame starting ro पढिले मन अछि ना नहीं एटी देखो एटा होछ गोटे रे ऑफ लाइट एटा होछ गोटे रे ऑफ लाइट ए माने एक्चुअली मीट करछन ना ए मान को पछाड़ को एक्सटेंड कराइ छी हां कि ना तो जेहेतु एक्सटेंशन द्वारा हमर इंटरसेक्शन हला गोटे पॉइंट एंड सेठी हमर जो इमेज बनला से इमेज को हम कोन कहबा वर्चुअल इमेज बोली कहबा बहुत बढ़िया ओके इट इज अपराइट माने जो डायरेक्शन रे ऑब्जेक्ट रो हाइट अछि से डायरेक्शन रे का हमर कोन होबो इमेज रो हाइट रहबो मेंटेनिंग द सेम वर्टिकल ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द मिरर देखलो ठीक ऑब्जेक्ट ता हमर मिरर से तो कोन अछि पैरेलल अछि ओके it is laterally inverted which means left side of the object appears on the right side in the image and vice versa हम जाके प्लेन मिरर आगे ठिया हबो तमरा राइट साइड हाथ जो अछि ताको उठेबे हला आ मिरर सेपटे तमर जो इमेज बनला तार सेटा राइट साइड हो ना लेफ्ट साइड बुझि परछो तो दिस इज कॉल्ड laterally inversion हला तमरो राइट साइड को लेफ्ट साइड बोलिया देखा जिवो माने लेफ्ट साइड बनिवो एंड तमरो लेफ्ट साइड से राइट साइड बनिवो माने इमेज रे कोन हो सेटा laterally inverted हिबो ओके इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सो एटी कोन देखिया मिलला हमको जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अछि दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बा हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हला सेकेंडली हमें जो इमेज फॉर्मेशन करले सेटार जो डिस्टेंस रहबो सेटा कोन रहबो ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस से समान रहबो गो टू प्लेन मिरर it is formed at the same distance behind the mirror okay as the object is in front of it बुझि परले भी जंसका there are some special cases the image is formed by the plane mirror is always virtual for a virtual object such as converging rays intercepted by the mirror हला तो मन रखो सब दिने एठी जो इमेज बनिबो से इमेज ता कोन हितबो कहलो virtual image हेतिबो and the image formed can be real an extended object like AB can be considered as a collection of infinite points जदि हम पाखरे गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अछि हला तो इमेज ता रियल हे पारे but this is not for the plane mirror okay plane mirror virtual image hi banibo each point forms its own image like A dash B dash C dash and and together this point images form an extended image so if the extended object is placed parallel to the mirror the image is upright okay if the extended eta dekhila eta kichi asubidha nai eta bujhila if the extended object is placed perpendicular to the mirror the image is inverted along the axis perpendicular to the mirror mane karo ye hoche tomaro mirror na tomaro mirror ta hala tome kon kolo object ko em rakhilo eta mirror tome object ko em rakhilo to image e hala the image is inverted along the axis perpendicular to the mirror जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है कि ऊपर अछि से एक्सिस रे का कोन हो इमेज ता इन्वर्ट है कि बन ठीक अछि बुझबा लागि इनसो बस आज पई एतिकी थाउ एटा हमरो गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास थिला अबाउट द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ए चैप्टर को हम कंटिन्यू करियो एंड ट्राई करिवा कि बहुत बहुत से केमती ए चैप्टर हमको बुझा पड़ियो हला आई होप आज हम जो जिंस डिस्कस करले सेगुडा हम बहुत से बुझा पड़थिबो हम टोटली इंट्रोडक्शन नेले चैप्टर रो हला
बेसिकली आम ये कौन कर रे ऑफ लाइट्स को लेकिन स्टडी कर ऑब्जेक्ट को लेकिन स्टडी कर तार इमेज फॉर्मेशन कर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट्स को लेकिन आज आम प्लेन मिरर विषय डिस्कस कले नेक्स्ट क्लास में कौन करवा स्पेरिकल मिरर विषय डिस्कस करवा स्पेरिकल मिरर पर आम स्पेरिकल लेंसेस गुड़ाक अच्छे विषय डिस्कस करवा ओके तापर प्रिज्म विषय डिस्कस करवा देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विषय डिस्कस करवा ठीक अच्छे सो एमती आम रे ऑप्टिक्स चैप्टर को बहुत बहुत से कंप्लीट करवा मन रख यहाँ लेंथी हो पाए बट आम धीरे धीरे करके ईच टॉपिक को डिटेल्स जाके बुझिया को ट्राई करवा कंसेप्चुअली पूरा पूरी स्ट्रांग होबा हला सो दैट ए जो पर्टिकुलर चैप्टर रहेगा हमरो स्कोर अधिक रहइबो बिकॉज इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर हला पिला माने छाड़ दोछन लेंथी बोली भाबी कि कोन बेना लास्ट मोमेंट को ए चैप्टरटा पढ़ा जाए एंड से टाइम पे टाइम भी न थाए बहुत कम ड्यूरेशन थाए तो सेति में बोली लेंथी चैप्टर अछि बोली कोई छाड़ दोछन बट लेंथ चैप्टर बोली छाड़नो हला आमे आराम से डिटेल्स से स्टडी करिया मु ट्राई करी मो आडू हला कि सब टॉपिक जेमती बहुत बहुत से हमको बुझा पड़े ओके जदि कौन जिन बुझा पड़े ताले तमे मते कमेंट करके जणाइबो ओके सो दैट्स इट आज मैं दी था पुणी भेटा हुआ नेक्स्ट क्लास रे विद ए न्यू टॉपिक टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू